Hello everyone. Today we will talk about a very important topic of plus 2 second year, that is communalism as an obstacle to national integration. National integration concept ame bujhi sariche. It is the both emotional and territorial unity under the one country or one nation, that is India. तो समय समय रे आगुरु कही रखी there are certain problems, there are certain obstacles which come across the path of national integration. National integration is such a positive thing. जेमती कि it gives rise to economic development, it gives rise to social development, it gives rise to peaceful existence, but it is not that easy. It's not that easy to attain, because the concept of national integration, what we mean, is most importantly based on emotional unity, which is disturbed by many factors such as your casteism, communalism, regionalism, class cleavages, all these factors, linguism, all are these factors which pose time to time problems in front of the path of national integration. Today we will discuss what is communalism and how the communal disharmony inside the country India has given rise to problems in national integration. भारतर एकता आउ भारतर यूनिटी रे केमिति गोटे प्रॉब्लम आनिछि, the force called communalism. Communalism बा जहा को ओडिया रे हम कहूचे सांप्रदायिकतावाद. सांप्रदायिकतावाद संप्रदाय रो आसीछि, माने religious community. One religion in India comprises a one religious community in India. Religion, as I said before, is diverse in India. वर्ल्ड रे सबुठारु अधिकांश रिलीजियन जदि कोनोसी कंट्री रे देखा दे थाए, दैट इज इन आवर इंडिया. एंड जदि एते गुडे रिलीजियन भारत रे एग्जिस्ट करूचंती, तो समय समय रे दैट path won't be that peaceful also. Hinduism constitute the majority, and there are other religious groups who are in minority status, like Christianity, like Islam. These religions, they comprise the minority position in India. So the peaceful existence is sometimes disturbed because of various factors. So communalism is an idea. As I say, communalism means the anything ism, anything which has ism behind it, means a set of ideas. I don't mean to say that set of ideas is necessarily rational, may not be necessarily rational, because as we will proceed ahead, we will get to know that the idea of communalism is not rational, it is not scientific. Still the ideas exist, still the ideology exists. So the ideology, set of ideas or the ideology which is based on a blind loyalty towards one's own religious group is known as communalism. बा जो अंध भावरे निजर अनुगत्यता आमे जाहिर करिथाउ निजर धार्मिक ग्रुप प्रति, that phenomena is known as communalism. It is never a rational ideology. We will proceed further while and will further discuss about it. So look at the point. Communalism is an ideology which states that the society is divided into religious communities whose interests differ and are at times even opposed to each other. जदि एते गोडे कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज अच्छंती, जदि भारत रे एते गोडे कम्युनिटी रे रिलीजियन हिसाब रे भारत डिवाइडेड, डेफिनेटली सेमानंकर इंटरेस्ट कॉमन नथिबो. Interest, I mean to say social interest, interest means economic interest, interest also political interest. These will not be similar and harmonious among all the people of the different religion, and it may sometimes oppose to each other. परस्पर परस्पर antagonistic बा opposition रे मध्य रही पारिबो सेमानंकर interest, and this idea, this loyalty, this ideology is known as your religious, is known as your communalism. It refers to aggressive chauvinism
based on religious identity. Chauvinism itself is an attitude that sees one's own group as the only legitimate or worthy group, with other groups being seen as inferior and opposed. आमे जतबेले कम्युनलिज्म कथा कहूचे it is very much represents the aggressive chauvinism. It's never a peaceful ideology, it's always aggressive, and aggressive in the sense what happens, we never tolerate other group. We think that our group, amari group jota seita adhika worthy and seita adhika legitimate group. The group, the identity, the religion I belong to is the most worthy group. More jo dharma re jo culture gudika achi, mo dharma ra ideas gudika achi seita legitimate and worthy, and rest of the groups, rest of the culture which represents the other religious groups are unworthy, or they are not legitimate, and they are not supposed to exist in my country or in my land. ए जो चिंताधारा, this is known as communalism. आउ एमिति भी आसे कि आमे अदर ग्रुप र चिंताधारा को, अदर ग्रुप र कल्चर को इन्फीरियर मध्य देखि थाउ. तेणुकरी आमे सबु बेले कम्युनलिज्म को गोटे अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कथा कहि थाउ, which is linked to religion. There is no necessary relationship between personal faith and communalism. निजर personal faith, मु गोटे हिंदू, मु प्रैक्टिस करे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मु सकाळे प्रेयर करे, आई पुट सम चंदन ऑन माय हेड, मु सूर्य को पानी दिए, गायत्री मंत्र करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज माय पर्सनल फेथ. इट हैज नथिंग टू डू विथ कम्युनलिज्म. पर्सनल फेथ सबु बेले पॉजिटिव सेंस रे थाए. इट इज अ वेरी मच optimist that gives peace to the mind of people, and it has nothing to do with communalism. eta mane rakho pila mane, a communalist may or may not be a devout person, or a devout believer may not be a communalist. जड़े जदि पर्सनली गोटे हिंदू धर्मर अविवाह को बहुत भरोसा करे हिंदुइज्म को, नॉट नेसेसरीली ही विल बी अ कम्युनलिस्ट. बा जदि जड़े कम्युनलिस्ट, सी नॉट नेसेसरीली कैन बी अ प्रॉपर अ staunch Hindu. It has nothing to do with religious faith of a person. Communalists believe in political identity based on religion. Religion को आधार करिके जो political identity, political aim को आमे achieve करबा को चाहू, सेटा होचे communalism. नहले तुमरो जो day to day practice regarding your religion is never included in communalism. This may be an aggressive political identity, and for this they are prepared to condemn or attack who doesn't share their identity. तो जो आइडेंटिटी टा मु निर्वाह करूची सेटा समस्ते डेफिनेटली करिबा उचित, नहले तार एक्जिस्टेंस एठी पॉसिबल हबा कथा नुए. एई प्रकार रा आइडिया इज कम्युनलिज्म, दैट इज वेरी अग्रेसिव नेचर. जोटा तुमे देखुथबो तालिबान रा आइडियाज रहूची, इफ इस्लामिक स्टेट करिवार आइडियाज रहूची, बट अ ट्रू फॉलोअर ऑफ इस्लाम से निजर कर्म, निजर फेथ और बिलीफ रे निजर रिलीजन को सीमित रखी थाए, ना कि अन्य कौनसी रिलीजन को इनटॉलरेंस देखाई थाए. It is important issue in India because it has been a recurrent source of tension and violence. आ गोटे very important reason जोथि पाई कि हमें communalism को पढ़ू, because communalism समय समय रे भारत रे बहुत बड़ बड़ riot, बड़ बड़ tension को जन्म देता है, violence को जन्म देता है. Let's come to the definitions of communalism. According to Prabhat Dikshit, communalism is a political doctrine which makes use of religio-cultural differences to achieve political ends. एटी से कौन कहले ना कम्युनलिज्म, एटी से आगथरा मु जो कथा कहली निजर निजस्व फेथ को बुझाएनी, सेठी सेथिपाई कहले कौन ना पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, पर्सनल फेथ नुहे, इट इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन जोटा कि रिलीजियन और कल्चरल डिफरेंसेस जोटा कि प्रिवेल करूचे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स भितरे ताकू यूज करी थाए टू अचीव पॉलिटिकल एंड. किए सेटा को यूज करी थाए? सम सेल्फिश इंटरेस्टेड पीपल, सेल्फिशली ओरिएंटेड पीपल यूज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट निजर पॉलिटिकल गेन पाई. सेकेंड आमे आसीबा बिपिन चंद्र. He gave
he gave the definition that the concept of communalism is based on the principle that the religious distinction is most important and fundamental distinction, and this distinction overrides all other distinctions. बिपिन चंद्र ये कौन कहले ना मनीष जीवन रे बहुत प्रकार डिस्टिंक्शंस अच्छे डिफरेंसेस अच्छी किंतु जेतेबेले वी आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कम्युनलिज्म जेतेबेले आमे बहुत अनुप्राणित थाउ जो लॉयल्टी हमर थाए आइडेंटिफिकेशन हमर थाए विथ आवर रिलीजियस ग्रुप सेतेबेले आमे बाकी सबु डिफरेंसेस को भूली कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस दैट कम्स अबव एंड एवरीथिंग इज आवर रिलीजियस डिस्टिंक्शन रिलीजन होची प्रथम जिंस जोटा कि मते आउ गोटे लोक ठारू पृथक करूची मु किछि देखेनी मु किछि सिमिलरिटी देखेनी किछि यूनिटी देखेनी व्हाट डिस्टिंक्शन प्रिवेल्स इज द रिलीजियस डिस्टिंक्शन. He adds that since Hindus, Muslims and Sikhs are different religious entities, their social, economic, cultural and political interests are also dissimilar and divergent. As such, the loss of one religious group is the gain of another group and vice versa. से गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा पिला माने कहले देख कि जेहेतु सबु धर्मर लोक मानकर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेफिनेटली अलग रहिबो तेणु करी डिफरेंसेस रहिबो आमे कोन सेठी जणे जदि कम्युनलिज्म द्वारा अनुप्राणित जणे जदि ब्लाइंडली निज धर्म द्वारा अनुप्राणित से कोन करि थाए से सेटा को यूज करा जाय को प्रकार रो कि वन रिलीजियस ग्रुप रो गेन करिबा आशा रे आमे कोन करथाउ आउ गोटे रिलीजियस ग्रुप को हानि करी थाउ बिकॉज कंट्री रे हमर सबु कंट्री रे रिसोर्सेस आर तो आम इकोनॉमिक्स पाठ आमर कहूँ कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड जे कौन सी कंट्री रे रिसोर्सेस इज लिमिटेड फॉर एग्जांपल तुम एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज रे सीट्स आर धर 60 सीट फॉर पीजी बा इन पार्लियामेंट गोटे निर्दिष्ट सीट रहुची फॉर विमेन फॉर एससी फॉर अदर पीपल गोटे निर्दिष्ट सीट्स रहुची बा गोटे एनी जॉब रे पाइबा पाई गोटे निर्दिष्ट अमाउंट ऑफ पोस्ट रहुची दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेस एंड दिस रिसोर्सेस आर डेफिनेटली लिमिटेड आ से जो लिमिटेड रिसोर्सेस को पाइबा पाई आमे जदि कम्युनलिज्म को अस्त्र कले ताहले सेठी कोन हबो ना गोटिए कम्युनिटी रो गेन करबा को जाई कि आउ गोटे कम्युनिटी रो हार्म बा लॉस हबा को पड़े बा गोटी जदि आउ गोटे कम्युनिटी रो जदि गेन होउची ताहले एपट कम्युनिटी रो लॉस होथाय तो एई जिंसटी को विपिन चंद्र रेज कले. If a particular community seeks to better its social economic situation, it is doing at the expense of the other community बोली से कहले. आउ जने कहले D.E. Smith बोली जे communalism as the function of religious communities in a way generally considered detrimental to the interest of other groups or the nation as a whole. As a whole gote nation pai communalism is detrimental. It is not a very fruitful thing. It's generally considered as demeaning the society, which is very devastating for the society. According to Gopal Krishnan, communalism is destructive Indian expression of religion in politics, which emphasizes religious identity of social groups and requires political society to be organized as a confederation of religious communities. Ken Panikkar कहले कौन he summarized that the various definitions of communalism जते सब definitions various thinkers माने देइचंती ताकू से summarize करी कि ताकू से analyze करी कि कहले कौन ना some points he has given. They are above all an ideology. Communalism is above all an ideology, a false consciousness जोटा कि सत्य नुहे से जो consciousness based on religion is not true, it is false. Religion for scarce resources or सीमित resources पाई competition बा struggle, competition for jobs, an instrument for ruling class politics. एई सबु जिंस को से point out करिथिले summarize करिकी. He says that the whole range of social relations and politics over which
communalism pervades today, and this spread of communalism involves two interrelated issues. दुईटा issues से उठेइथिले कौन ना communalism as a state of consciousness in the society, communalism as instrument of power, not purely for capturing state power but operating in political, social and economic domains and at all levels of social organization. प्रथमटा जोटा से कहले कम्युनालिज्म एज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ता माने होची कोन ना जेते बेले इट इज अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन perceiving that there is one identity, social construction of identity, consciousness mind bhitar develop kariba lok manankar, that this identity, that construction of identity on the basis of religion, consciousness on the basis of religion. आउ से जो consciousness on the basis of religion सेकेंड रे लागू ची जोटा से कहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, से जो consciousness टा को हमें यूज करू कौन ना टू कैप्चर पावर इन ऑल लेवल्स पॉसिबल. असगर एली इंजीनियर जहार कि बहुत इंपोर्टेंट काम कम्युनलिज्म उपरे स्टेटस ऑफ वुमेन उपरे मध्य से काम करिसेंती. ही सेज दैट द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द डिजायर्स ऑफ मेंबर्स and the provisions of the society to grow is the key factor in generating communalism and communal violence. से कहले कौन ना जो different communities, religious communities they exist, they have desires, they have interest, I mean to say, and these interest when there is a gap between कि state रो भी गोटे capability अच्छी, state मध्य गोटे grow करिबा पई किछि गोटे तार मध्य गोटे capability अच्छी केते से देई परिबो to the people. से जो discrepancy जेते desire बढ़ुची आरे state रो grow करिबार capacity भितरे जो differences टा रहुची से differences जोगु communalism आसुची. He necessarily never thought only religious difference is the cause behind communalism. He said about numerous factors which gives rise to communalism. Let's come to the dimensions of communalism. Professor T.K. Women suggested 6 dimensions of communalism. T.K. Women जो 6 dimension देइथिले ता भितरु प्रथम होची कोन ना assimilationist or communist communalism. Assimilationist बा communist communalism कहले हमें कौन बुझुचे ना small religious groups are assimilated into big religious group. एई प्रकार रो communalism जो धारा अछि सेथरे कौन होची ना छोटो छोटो religious groups जो अछंती सेमानन को जते बेले गोटे बड़ अम्ब्रेला तळु को निया हे जाउची सेमाननकर कौन रहउची टेंडेंसी रहउची तांकर डिफरेंसेस मेंटेन हबार सेमाने religious community हिसाब रे आइडेंटिफाई हबार तांकर नेसेसिटी रही जाउची. कौन फॉर एग्जांपल सपोज तमर हिंदू पर्सनल लॉ बा जोटा कि हिंदू मैरिज एक्ट अंडर रे केवल जे हिंदू रिलीजन लोक आछंती ता नुहे, सिक्स कम अंडर दैट, बुद्धिस्ट पीपल कम अंडर दैट, Jains come under that. तो ये सब जो religion माने Hinduism under रे आसी जाउचंदी, they have to follow the marriage act of 1956. तो सेठी कोन होची जो छोटो छोटो religious community को आमे गोटे bigger umbrella that is Hindu personal law र umbrella under रे आनी दोचे. से प्रकार रो communalism को आमे कहूचे कोन ना communist communalism बा assimilationist. तापरे होची कोन welfareist communalism. In this type of communalism there is emphasis is placed on the welfare of a particular community. आमे बाछी बाछी का जो religious community रा टिके problematic area अछि ताको आमे कोन करि थाउ ना welfare programs ता पई देई थाउ. For example जदि कोनोसी religious group रे there is a problem of education, there is problem of development of literature by language, सेठी कोन करता है सरकार scholarship देई थाय to that particular religious group for
फॉर हायर एजुकेशन में भी फॉर एजुकेशन में भी तांको पई कोनोसी गोटे रिलीजियस ग्रुप पई गोटे हॉस्टल करि दबा बा तांकर स्कूल को तांकर से रिलीजियस कम्युनिटी द्वारा चालित स्कूल को कोनोसी एड दबा ए सब जिंस जाउची कोन ना ए सब जिंस तमरो सेकंड डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म रे जाउची दैट इज वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म. थर्ड इज योर रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म. अच्छा रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म कहिले कौन बुझुछ आई विल गिव यू वन एग्जांपल फर्स्ट. छोट छोट रिलीजियस कम्युनिटीज जेते बेले से माने निजको बिगर इश्यूज थारू आलूफ रखंती. फॉर एग्जांपल इंडिया रे तमर एते प्रकार कम्युनल वायलेंस हे सारिची बट हैव यू सीन पार्सीज हैव केप्ट देमसेल्फ आउटसाइड. बाहाई धर्म गोटे अवलंबी अछंती किछि जण भारत रे पार्सीज अछंती स्मॉलर ग्रुप्स से माने जैन्स अछंती स्मॉलर ग्रुप्स दे कीप देमसेल्फ aloof from this violence but from this any political related activities बा जो बिगर communal activities रो निजो को aloof रखंती से निजो काम रे निजे थांती निजो को रिट्रीट करी नहीं थांती from bigger issues. Fourth category is retaliatory category of communalism. Retaliatory communalism कहले कौन बुझुच ना जो religious community जोटा कि एबे आमे सबुठारु harmful process of communalism जो थरे कि आमे harm करी दो hurt करू injure करू to the members of other religious communities जोटा कि modern communalism आमे कहिबा हिंदू मुस्लिम राइट रे होची बा हिंदू क्रिश्चियन राइट रे होची से गुडी को आमे retaliatory communalism बोली कहिबा. Fifth dimension is separatist dimension, which which is one religious community decides to maintain its cultural specificity and demands a separate territorial state within the country. निजे जेतेबेले गोटे religious community निजर separate state रो demand करि थांती से प्रकार रो dimension को आमे कहूचे कोन ना separatist communalism. Last dimension of communalism is secessionist communalism, which means according to T.K. Oman that religious communities here in this dimension demands for a separate political identity and insist to have separate state. All total they demand for political sovereignty. For example, Sikh manankar madhyare jo Khalistan movement, they ask that the continuous asking of Sikh for Khalistan, a country called Khalistan, से प्रकार डिमांड को आमे कौन कहूचे secessionist communalism. What is the origin of communalism एमे आमे आसीबा. Communalism ro origin communalism is never a medieval concept. आगरो भारत रे आमे जेतेबेले यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रे आमे देखिचे रिलीजियस कंपोजिशन आमे देखिचे मेनी रिलीजन आर इंडिजिनियस रिलीजन लाइक सिखिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म जैनिज्म दे आर इंडिजिनियस रिलीजन. इंडिजिनियस रिलीजियस कम्युनिटी मध्य रे गोटे पीसफुल एनवायरनमेंट सबले थिला किंतु जेतेबेले पार्सीज माने आसिले जेतेबेले इस्लाम भारत को आसिला जेतेबेले क्रिश्चियनिटी भारत को आसिला सेतेबेले देयर वाज पीसफुल एक्जिस्टेंस टू. So when does जो medieval India कथा में कहिबा communalism तारो केबे भी सेठी communalism रो छिटा मात्र पड़ी नथिला. communalism रा आरंभ बहुत कोडे thinkers कुहंती बहुत कोडे researchers कुहंती कोन both communalism and nationalism have the same historical epoch. माने they have a same temporal period एका सांगरे से माने आसीचंती. They are product of modernity. They are product of modern process. Romila Thapar and Harbans Mukhia emane kahithile they are of the opinion that communal identity did not exist in ancient and medieval period of Indian history. एटा ताले केबे आसिला ना जेतेबेले कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स मानकर रूल समय रे सेतेबेले तार पड़ीथिला बीज पड़ीथिला. हिंदू मुस्लिम यूनिटी till 1857 रे जेतेबेले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हेइतिला सेतेबेले that was the true epitome of Hindu Muslim unity. Everybody united, even the Hindus united with the Muslims and they wanted a Muslim ruler to take the throne of Delhi. The सेतेबेले situation was very peaceful also. The nationalism जेतेबेले develop कला with the elite class masses and जेतेबेले educated masses माननको भितरे nationalism develop कला. Nationalism
गोटे न्यू ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल भाबरे काम कला गोटे आइडियोलॉजी भाबरे काम कला अमंग द एजुकेटेड मासेस सेतेबेले कम्युनलिज्म रा आरंभ मध्य हेतिला जेतेबेले वी कैन से nationalism was a new organizing principle and ideology which started among the educated masses. On the other hand, communalism developed in certain areas and sections of the society where the national consciousness could not develop. एटी कौन हैला ना जेतेबेले nationalism develop हैला जो जो जगह को nationalism penetrate करी पालानी. For example, uneducated masses, for example, smaller communities जो मानकर किछिटा छोटो छोटो problems थिला सेटिके जेतेबेले कम्युनलिज्म स्प्रेड करि पालानी सेतेबेले सेमाने कोन भाबिले कि आमे गोटे नुआ आइडेंटिटी आमे गोटे निज आइडेंटिटी रे निजको प्रूफ करिबा नेशनल आइडेंटिटी कथा सेमानंकर भितरे पेनिट्रेट हेई पारि नथिला तो से समय रे रादर देन सर्चिंग फॉर न्यू आइडेंटिटी अंडर व्हिच वी विल यूनाइट वी सर्च्ड फॉर the existing identity कौन ना मे बी कास्ट आइडेंटिटी मे बी आवर रिलीजियस आइडेंटिटी मे बी आवर रैशियल आइडेंटिटी ए सब जो एक्जिस्टिंग आइडेंटिटी को आमे पुणी जाबुड़ी धरिकी आमे से जो नेशनल आइडेंटिटी रो दूरे जाइकी वी क्रिएटेड आवर ओन आइडेंटिटी सेइठु आरंभ होइतला कम्युनलिज्म सेइठु आरंभ होइतला कौन ना निज रिलीजियस ग्रुप को अधार करिबा और निज रिलीजियस ग्रुप मध्य रे आइडेंटिटी टाको खोजिबा और यूनाइट होबा. For Asghar Ali engineer to understand the roots of communalism, one must understand that communalism neither represents religion nor patriotism. It represents interest. Difference of interest कथा इति आछि economic interest, social interest सबु किछि interest difference. He further pointed that no religious community is homogeneous as religious communalists make it to be. जदि religious identity गोटे only कारण थांता origin थांता communalism रो ताहाले आमे गोटे religion भितरे तो बहुत differences रहुची ताहाले religion गोटे unifying factor केमिति हबो ये कहिले कोन असगर अली इंजीनियर there are other factors जोटा कि आमे कहूचे difference in interest, difference in economic interest, difference in political interest that is amalgamated with the religious identity आउ से to origin of communalism बोली से कहिथिले. So he argued that religion is not the only source of origin of communalism. What are the characteristics of communalism? First, communalism is narrow and selfish. As we all know, it is never जदि गोटे national identity कथा कहूचे ताले it is wider, ताले it is broader. But जदि आमे communalism कथा कहूचे जदि आमे casteism कथा कहूचे जदि आमे identity on the basis of gender कहूचे identity on the basis of parochial region ए सब जो कथा जदि कहूचे ताले it is definitely not national, not broader, it is narrow and also as well as at the same time selfish. Second is it is an ideological concept which is specifically political ideology. एटा definitely मु आगुरु भी कहिछि false ideology हेई पारे, false consciousness हेई पारे, but certain set of ideas are propagated in communalism. Third is it is opposed to secularism. Secularism and communalism cannot go in hand in hand. सेक्युलरिज्म आमे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे करि दैछे भर्ती करिछे बट इन प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म को अपोज करिबा पई सब बेले समय समय रे हमको ऑब्स्टेकल फेस करिया को पड़ी थाए जोटा कि कम्युनलिज्म सेटा करि थाए. Fourth is its interest superimposes themselves on the national interest. communal parties हेले communalist हेले सेमानंकर इंटरेस्ट सबु बेले कौन हुए ना नेशनल इंटरेस्ट थारु समाने निजर इंटरेस्ट को ऊर्ध्वरे रखंती. सेल्फिश परा सेल्फिश आइडियोलॉजी तो सेथरे नेशनल इंटरेस्ट इज नेवर सेल्फिश, इट इज सेल्फलेस लव फॉर द नेशन. तो सेल्फिश लव डेफिनेटली सेमाने सेटा को ऊर्ध्वरे रखी थांती दैन नेशनल लव बा नेशनल इंटरेस्ट. फिफ्थ इज it is a social phenomena definitely because society is affected, society re origin heichi, society re loko impact paduchi, that is a social phenomena. It has a wider base and several dimensions.
कम्युनालिज्म रो डायमेंशंस मु तुमको कहली केमिति टिके ओमेन एते प्रकार डायमेंशन कहिचंती एंड एटा बहुत वाइड जदी रिलीजन रु स्टार्ट होची ताहले स्प्रेड होची इकोनॉमी पॉलिटिकल ए सब को स्प्रेड होची बा जदी इकोनॉमिक इंटरेस्ट रु स्टार्ट होची सेटा पहुंची जाउची रिलीजियस इंटरेस्ट को तो डायमेंशंस आर वेरियस एंड वेरिएड so it has a wider base जेते प्रशस्त डायमेंशन होबो सेते वाइडर बेस मध्य रहिबो कम्युनलिज्म रो it is far from rationality definitely ideology achi but that ideology is definitely not a rational ideology it is not based on rationality scientific nuhe esobu ideas it is far from rationality gala it breeds mutual distrust disharmony and hostility among the communities निश्चित भाबरे we will be mutually not trusting each other harmony न थाए मो भितरे hostility थाए we are antagonist to each other if there is communalism तापरे होची कोन it considers a particular religious community as separate from the rest of the communities 10th होची कोन ना it is a colonial construction कहीं ना मुझे कहली आगरू कि एटा मिडिएवल एंशिएंट फेनोमेना नुहे इट्स अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट होची कोन इट लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर आमे पावर रो मिसयूज करिथाउ अब्यूज करिथाउ पावर जोटा कि आमर पॉजिटिवली यूज होबा कथा आमे ताकू लोक मानकर हार्म करिबारे लगेई देथाउ वी डोंट इवन वी आर नॉट इन सेंसेस व्हेन देयर इज अ राइट जे लोक माने निजर सेंस रे नथांती व्हेन दे किल पीपल सेठी जो पावर ता तांकर आसी जाई थाए सेटा से काइंडनेस आउ ह्यूमैनिटेरियन पर्पस पई आमे लगेई नथाउ वी यूज इट for the killing of people. It is a modern phenomena, not a medieval phenomena. Last, communalism operates at different levels ranging from individual relations and interest to local, institutional and national politics to communal rights. देखो बहुत लेवल रे कम्युनलिज्म काम करे इंडिविजुअल संपर्क खाली नुहे लोकल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल रे नेशनल पॉलिसीज रे ए सबु जिंस रे कम्युनल राइट्स मध्य ए सबु जिंस रे डिफरेंट लेवल रे कम्युनलिज्म काम करता है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कम्युनलिज्म? फर्स्ट इज द रोल ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज. कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज रो रोल बहुत महत्वपूर्ण बिकॉज ये जो सेपरेटिज्म टा एटा सबु बेले ऊपर एलिट लेवल रे हेई थाए जोटा कि जो माने कि पार्टी पॉलिटिक्स रो गेम खेली थांती. तो रोल ऑफ जो कम्युनल पार्टीज माने अच्छी ताको हमें कहबा कि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से माने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करथांती पैसिवली हो बा एक्टिवली हो इन क्रिएटिंग कम्युनल टेंशंस इन द कंट्री. तो तांकर रोल टी बहुत इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज हिस्टोरिकल कॉजेस. पिला माने हिस्टोरिकल कॉजेस बा जोटा को हमें कहूचे फॉल्टी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ताक से मध्य वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनलिज्म. जेते बेले हिस्ट्री हमें कहिबा हिस्ट्री हमें कहिबा वी कैन टॉक दैट गोटे फेज ऑफ हिस्टोरियन थिले किए ना तुमर ओरिएंटलिस्ट आउ गोटे फेज ऑफ हिस्टोरियंस थिले यूटिलिटेरियंस आउ गोटे फेज थिले कौन ना तुमर नेशनलिस्ट. जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस माने थिले they were just mesmerized by Hindu religion and Hindu religion कहले से कहा को बुझौथिले that Vedic religion. They were so much mesmerized by the Vedic culture that they raved reviews about the Vedic culture. For them Hinduism and specifically the Vedic culture is the most important culture, and for that they praised Hindu culture, they praised Indian culture in the name of Hindu culture. तो थे माने एते अनुप्राणित थिले बिकॉज मीडियव थे माने जो यूरोपियन आमे तां कहबा कि यूरोपियन हिस्टोरियंस जो माने सते बेले से मानंकु इंडिया रा कल्चर दे वर अपसेट विथ देयर ओन कल्चर. जो यूरोपियन मिडिएवल समय जो यूरोपियन कल्चर से माने दे वर अपसेट विथ द ओल्ड ओन कल्चर. तांको भितरे मॉडर्निटी आसी जाइतला. दे लुक टुवर्ड्स इंडिया कि सेट इंडिया रे कल्चर टी केते सुंदर. इंडिया रे कल्चर इज सो मेस्मराइजिंग बिकॉज ऑफ द वैदिक कल्चर. आ से माने ता विषय बहुत प्रशंसा करिथिले. आ से जो हिस्ट्री लिखा आइतला दैट इज बेस्ड ऑन हिंदू दैट इज प्रेजिंग हिंदुइज्म बा हिंदू कल्चर. सेकेंड तुमर आछंती किए ना तुमर यूटिलिटेरियंस. एमाने रहिले किए
ना जेम्स मिल्स रु आरंभ होईची ए जो टाइप ऑफ हिस्ट्री जोटा कि हमर पकई देइची ये कोन तमर को होची फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हिस्ट्री जोटा आसी जाउची ही डिवाइडेड जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री जोटा सेटा को से करिथिले जेम्स मिल करिथिले पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री कोन कहिले से एंशिएंट को हिंदू हिस्ट्री बोली कहिले मिडिएवल को मुस्लिम रूल बोली कहिले जाहो से एटलीस्ट ब्रिटिश रूल टा को क्रिश्चियन रूल बोली कहि नहंती thanks to him but this division laid the foundation of periodization of history and they semananko hisab रे थिला कोन जो यूटिलिटेरियंस मानक हिसाब रे कोन थिला ना the rule of britishers is a golden era आ इंडिया रे एटा गोटे boon of god that we are being ruled by the britishers तापरे तुमरा आसिले nationalist history nationalist historian से माने कोन कहिले ता तांको पई अगेन दैट ए जो पीरियडाइजेशन को चेंज करिया पे से माने बेसी किछि करि नथिले से माने अगेन से जो निजर आइडेंटिटी टा को क्रिएट करिबा पई नेशनलिस्ट आइडेंटिटी पर्पस रे से माने पुणी यूनाइट करिथिले सेही पुराना ओरिएंटल हिस्ट्री रो जिनसटी को पुणी धीरे धीरे से माने रिवाइव करिथिले बट दे डिडंट डू एनीथिंग जदि से माने से जो फैक्शनलिज्म अमंग द हिस्ट्री जो मिडिएवल एंशिएंट ताको जो फैक्शंस कराइथिले ता पई जदि किछि करिथांते ताले हिस्ट्री को हमें फॉल्टी हिस्ट्री कहि न थांते ए जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री दैट इज वेरी इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट रे जो रहुची के पीरियड गोल्डन एज ए पीरियड इज द रूल ऑफ मिडिएवल पीरियड इज द रूल ऑफ मुस्लिम रूल जोथरे की बहुत कन्वर्जन इतला बा जोथरे की भंगारो जाइतला एक्सेट्रा these creates communal tensions. Third is your psychological causes. Psychological causes रे आसुची तुमरो inferiority and superiority. Inferiority in the minds of the minority, superiority in the minds of the majority. ए सब जिनस psychological causes रे आसुची जोटा कि हमरो communalism को अधिका दृढ़ीभूत करूची. Next is your social causes. सामाजिक रूप रे सामाजिक कहले तो सबु किछि को नै कि सामाजिक कॉज बोली बुझा जाउची सामाजिक कॉजेस रे हमर आसुची कोन वी आमे देयर इज अ डिफरेंस of intermingling there is a difference that we socially think different from another religious group and say difference gives rise to communalism as well communal feeling as well आउ गोटे रीजन होची कोन ना पॉलिटिकल कॉज व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट काहे कि ना सम ऑफ द एलिट्स पॉलिटिकल एलिट्स दे यूज द masses for gaining political power they use and misuse the emotions of people the religious sentiments of the people to gain power that is their selfish interest which is reflected in the society जोथरे कि से माने masses को use करूचंती for violence for any kind of riot they are using to gain simply political power and vote bank politics religion ना रे vote को acquire करिवा ए सब जिंस आसुची केतबेले ना जेतबेले political greed बढ़ुची for the power political power and that is another reason for communalism. Next reason is role of foreign forces. Definitely it is very worthy to discuss because समय समय रे भारत बाहर रो forces amara foreign countries amara neighboring countries they try to disturb the peace which exist in India. और सेथि पई समय समय they train people on communal lines they train people to behave in certain way which brings discrepancies among the two religious groups तो सेटा गोटे major कारण. Next is the role of media. Media role is very important because media has a very गुरुत्वपूर्ण दायित्व थाए to bring the news but for certain TRP issues आमे गोटे न्यूज को बार बार जेतेबेले ताकू देखा दिया जाए बा आमे जेतेबेले कम्युनल न्यूज गोटे कम्युनल वायलेंस कथा जदी हेछि भुवनेश्वर रे ताकू जदी न्यूज रे बारंबार देखा जीवो यू नेवर नो द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल लिविंग इन अनदर एरिया विल बी डिस्ट्रैक्टेड और सेठी भी वायलेंस ब्रेकआउट करि जीवो बोली चांसेस थाए तेणु करी रोल ऑफ मीडिया इज अनदर कॉज. Next is failure of government.
समय समय पिला माने देखा देछि कि गवर्नमेंट रो फेलियर मध्य गोटे कारण जोथि पई कि कम्युनलिज्म डेवलप करि थाए बिकॉज गवर्नमेंट इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स जदि गोटे रिलीजियस ग्रुप इकोनॉमिकली बैकवर्ड तांको पई किछि इकोनॉमिक व्यवस्था करिबा जदि गोटे रिलीजियस ग्रुप तमरा एजुकेशनली बैकवर्ड ता पई किछि व्यवस्था करिबा जदि एटा सुरखुर रे हेई पारंता ताहाले कम्युनल लोक माने कम्युनल लाइन्स रे हुए तो एकत्रित हबा आइडेंटिफाई करिबा निजोकु टिके कमी पारंता नेक्स्ट इज इलिटरेसी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस this is very important reason pilla mane illiteracy it is seen that certain religious communities are educationally very hyper. For example, Parsis are very educated. For example, tamara certain sections of the people are educated. Tamara census कहूची कि education among the Muslims is bit low. तो सही केस रे कौन हुए ना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ता पछ पछरे आसीबो जोटी एजुकेशन लैक करे सेठी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आसे तो देयर कम्स द पोलराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट W.C. स्मिथ कहिले कि जेतेबेले सेपरेटिज्म हे जाउची इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफर कर जाउची सेठी कोन होउची ना जो एलिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन they gather people on the basis of religion so that they can bargain before the government but they can bargain before the state आउ से जो प्रिंसिपल द्वारा कोन होउची elites are there is separatism on the level of elites आउ सेटा रिफ्लेक्ट हुए केमिति as a violence in the level of masses elite unite होउचंती separate होउचंती on the basis of interest एपटे masses unite होउचंती कोन पई ना टू से जो इंटरेस्ट आंको ऊपर प्रभाव पकोचे तमे वायलेंस करो आमे इंटरेस्ट पई लडुचो तमे वायलेंस करो ए जो जिंसटी देखा जाउची इलिटरेसी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज वेरी इंपोर्टेंट रीजन लास्ट इज रिलीजियस कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन तुमरा देखो पिला माने कंधमाल रे जो रॉयट हेइथिला दैट वाज बिकॉज ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन जेतेबेले गोटे धर्मर लोक आउ गोटे धर्म को परिवर्तन करि थांती जो सोर्स धर्मटी थिला जो धर्मटी द रिलीजन ऑफ ओरिजिन थिला सेटा तांको पई असह्य हेइ पड़े कि आम धर्मरु लोक कमी जाउछन द नंबर्स इज डिक्रीजिंग बाय रिलीजियस कन्वर्जन तो सेतेबेले एंटागोनिज्म टा डेवलप करि थाए दे बिकम वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द ग्रुप which the people are converting into कंधमाल रे जो तमरा रॉयट हेइतला that was because of this religious conversion. Now let's discuss about the effects of communalism. The first effect of communalism is communal violence which leads to violence and bloodshed. तो जो कम्युनलिज्म रो वेरी इंपोर्टेंट गोटे आउटकम होची कोन ना जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुए इकोनॉमिक इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट जो हुए दैट डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंसेस इन आइडियाज माने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज gives rise to conflict of interest एटा गैरी मार्क्स कहिथिले जे conflict of interest is evident in the it is transformed to actually conflict of ideas ताको further असगर अली इंजीनियर कहिले कोन ना ए जो conflict of idea आसी जाउची ताको हमें आ गोटे से गोटे नुवा कांसेप्ट देले आइडियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ए जो जेतेबेले आइडियोलॉजी फ्रेम हे गला आग आसिला डिफरेंस इन इंटरेस्ट तापर आइडियोलॉजी फ्रेम हे गला नेक्स्ट एजेंडा रहुतला कोन रहे कोन कम्युनलिज्म रे ना टू क्रिएट ब्लडशेड टू गो फॉर अ राइट टू क्रिएट वायलेंस जो थे कि बहुत प्रॉपर्टी नष्ट हुए जीवन तो नाही नथिबा नष्ट हुए यू कैन टॉक अबाउट गोध्रा हत्याकांड बट यू कैन टॉक अबाउट एनी कम्युनल राइट्स सेठी जदि बहुत लोक निजर छुआ मानन को हरई बसंती बहुत छुआ माने निजर पेरेंट्स को हरई बसंती स्त्री लोक मानकर अवस्था कहिले न सरे दे आर रेप्ड कंटिन्यूअसली रेप्ड दे आर केप्ट एज सेक्स स्लेव्स एक्सेट्रा. Second effect of communalism is creation of hatredness. It is a psychological behavior continuously mind रे से जो hatredness रहिबा
for another religion. ए जो जिनसटा होची इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म सेठी केबे भी जेतेबेले साइकोलॉजिकली वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर हेटिंग समबडी, देन व्हाट हैपेंस से जो यूनिटी केबे भी आसीबनी, से जो इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन रो जोटा नेशन बिल्डिंग रो प्रक्रिया मु कहितली कि इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली वी आर यूनाइटेड, से यूनिटी टा केबे भी आसीबो नाही इफ देयर इज हेट्रेडनेस इन द माइंड्स ऑफ पीपल, सेटा सबु बेले कम्युनलिज्म रे रहे. थर्ड इफेक्ट इज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज. जनरली देखा जाए गोटे कंट्री जोटा कि कम्युनलिज्म फेस करि थाए सेते बेले कोन रुहे ना हमर डेफिनेटली गोटे हॉस्टिलिटी हॉस्टाइल एटीट्यूड थाए माइनॉरिटीज को प्रति. जो आइडिया कि वी शुड ड्राइव अवे सर्टन रिलीजन, छोट छोट रिलीजन अछंती तांको ड्राइव अवे कर दबा, ब्रिंगिंग देम इनटू वन फोल्ड, गोटिए रिलीजन को नेशनल रिलीजन करी गढ़ी तोलिबा मनरे रखिबा, दीज आर नोन as hostility towards minorities. Minorities रा कल्चर को एक्सेप्ट न करि परिबा, तांकर कल्चर को टॉलरेट न करि परिबा, तांकर डिफरेंसेस इन एक्शन, डिफरेंसेस इन ड्रेस पैटर्न, डिफरेंसेस इन फूड हैबिट्स, डिफरेंसेस द वे दे प्रे देयर गॉड एक्सेट्रा, ए सब को एक्सेप्ट न करि पारि कि गोटे हॉस्टाइल एक्शन तांको प्रति रखिबा इज एन इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म. नेक्स्ट इज मेजोरिटेरियनिज्म, जोटार माने होची कोन ना गोटे कंट्री रे जे मेजोरिटी धर्म रहुची, जो धर्मर लोक मानक भितर मेजोरिटी पॉपुलेशन रो पावर रहुची, से तांको भितर कोन होची ना तांको भितर से आइडिया टे प्रिवेल करूची कि एज वी आर मेजोरिटी द डिसीजन, द सोल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन आवर हैंड्स. आम भितर से राइट्स रहिबा दरकार, आम भितर पॉलिटिकल पावर रहिबा दरकार, आम भितर संपूर्ण सत्तार कंट्रोल रहिबा दरकार, आम पाखरे इकोनॉमिक पावर मध्य रहिबा दरकार. ए जो आइडिया, ए जो कांसेप्ट इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म, आ ए जिनसटा कम्युनलिज्म द्वारा आसी थाए. फिफ्थ इज माइनोरिटेरियनिज्म, जोठी ए प्रकार रो साइकोलॉजी गोटे मेजोरिटेरियनिज्म रो साइकोलॉजी मेजोरिटी रिलीजन मध्य रे थाए, माइनॉरिटी रे जो माने सब अछंती, जो धर्म रो लोक माने अछंती, तांको भितरे माइनोरिटेरियनिज्म देखा देई थाए. ता माने होची कोन, जो आइडिया, जो आइडियोलॉजी बिलीव करे कि एज वी आर माइनॉरिटी इन द कंट्री, वी आल्सो डिजर्व a position in the decision making process. We also deserve a power which is there for us in the political sector. We need a economic power also. We say jo jinsoti hochi kon na minoritism principle. Sixth is communalism suppress freedom of religion. फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कम्युनलिज्म केबे भी रेज करि न थाए. फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने we are not it is not in our hands that we are born to certain religion, but जदि मते कोनोसी धर्म निजो को भलो लागुची, I am free to access that, किंतु I can convert to that. किंतु मु तुमको कॉज रे कहिछि कि रिलीजियस कन्वर्जन हमको कम्युनलिज्म आनी देई थाए. तो तेणु करी आमर से जो फ्रीडम टू सीक रेफ्यूज टू एनी अदर रिलीजन, टू अडहेयर टू एनी अदर रिलीजन, कम्युनलिज्म सेटा को सप्रेस करी देता है. लास्ट इज थ्रेट टू सेक्युलरिज्म. डेफिनेटली कम्युनलिज्म जोठी अछि सेठी सेक्युलरिज्म रो कोनोसी स्थान नाही. तेणु करी कम्युनलिज्म सब बेले सेक्युलरिज्म रो आइडिया और सेक्युलरिज्म रो प्रिंसिपल को सप्रेस करी थाए. वी नेवर रेस्पेक्ट. सेक्युलरिज्म माने कोन, रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स practices, religious practices, accommodating and tolerating each other's religious ideas, and moreover there shouldn't be any state religion, and what freedom to choose any religion I need to access to, I need to profess. से जो जिनस को सब बेले कम्युनलिज्म गोटे थ्रेट हिसाब रे काम करि थाए. What are the remedies of communalism? First is patriotic feeling and feeling of nationalism develop haba uchit, should be created among the people through all possible ways. Media re ho, social media re ho, through educational books re ho, through speech ho, through academic articles ho, ए सबु द्वारा पारु पार्जंत we need to develop this patriotic feeling and the feeling of nationalism. Second is
ban of fundamentalist political organizations. जो political organizations आमर communalism को अधिकांश नियारे घिओ देला परिका काम करूची से सब organizations गुडी को ban करा जाओ जेमती कि तमर RSS is banned in India. गोटे कौन सी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि रिलीजियस बेसिस रे वोट को एक्सप्लॉइट करूची लोक मानकर सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करूची ताकू बैन करिबा गोटे रेमेडी. थर्ड इज वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड बी स्टॉप्ड. भारत रे एटा गोटे बहुत खराब जिंस आस्किंग फॉर वोट्स ऑन पेरोकियल आइडियाज आइडेंटिटी सेटा को बंद करिबा उचित. फोर्थ इज एनकरेजमेंट ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज. गवर्नमेंट इंटर रिलीजियस मैरिज जते पारु संभव एनकरेज करिबा उचित. मास मीडिया शुड बी नेशनल एंड रैशनल एंड conscientious in publishing and showcasing the news regarding communal violence. निज TRP पाई नुहे but society रे peace prevail करिबा पाई mass media रो गुरु दायित्व रहिबा उचित. नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन अगेंस्ट फोर्सिबल कन्वर्जन. कौन सी प्रकार रो फोर्सफुल कन्वर्जन गुडी को कर्व करिया पई लेजिस्लेशंस करिबा उचित. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट शुड बी शुड इम्पार्ट नेशनलिज्म. आमर जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट आम पढ़ुचे स्कूल आ कॉलेज लेवल रे सेथरे नेशनलिज्म रो बेसी इंपोर्टेंस रहिबा उचित. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंस्टांसेस. पिला माने मु सबु तुमको कम्युनलिज्म रा एस्पेक्ट्स कहि सालेणी. मु तुमको आठी किछरा शॉर्ट क्वेश्चन आसे अबाउट सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बा कम्युनलिज्म ता विषय कहि रखुची. सम ऑफ द एग्जांपल्स इन इंडिया इंपोर्टेंट रॉयट्स जोगुडा हेची सेडा शॉर्ट क्वेश्चन आसे. सेडा देखो स्क्रीन रे लिखा हेची गोध्रा रॉयट जोटा कि 2002 मसीह रे हेतला. बॉम्बे रॉयट्स जोटा कि 1992 डिसेंबर आरंभ करी 1993 जनवरी रे हेतला. बॉम्बे रॉयट्स ता ऊपर बहुत फिल्म भी अच्छी. वेरी फेमस फिल्म इज बॉम्बे. कंधमाल रॉयट्स ऑफ 2008 ओडिसा रे हेतला. हिंदूज आउ क्रिश्चियंस मानक भितरे. सिख रॉयट हेतला 1984 रे जेतेबेले कि इंदिरा गांधी कर शासन थिला. इमरजेंसी डिक्लेयर हेतला आउ सेतेबेले इंदिरा गांधी को सिख माने असैसिनेशन मध्य करिथिले. आउ गोल्डन टेम्पल भितरे मध्य सेतेबेले टैंक पूरा हेतला. दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. आउ सेतिके बेले सब तार इंपैक्ट रे कोन हेतला ना तुमरो सिख रॉयट हेतला ऑपरेशन ब्लू स्टार रो इंपैक्ट रे. सेटा होची 1984 रे हितला. नेक्स्ट अनदर वेरी इंपोर्टेंट रॉयट इज 2013 मसीह रे जो मुजफ्फरनगर रॉयट हेतला. एटा आ गोटे रॉयट. तो तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन रॉयट्स विषय रे आसी जाय थाए. तेणुक पिला माने आजिर क्लास रे हमें देखिले हाउ कम्युनलिज्म ए नैरो आइडिया अ नैरो सेंस ऑफ लॉयल्टी इज अ problem is an obstacle threat to national integration. Thank you very much.